चलो, आई थिंक अपन लाइव है। है। हाँ हाँ, वी आर लाइव। या अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों, जहाँ पे भी आप हो। दिस इज द सदर्न मोस्ट लाइव आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। वी आर ऑलमोस्ट 45 डिग्री लैटिट्यूड. For students of science, it means that it is halfway down to the actual South Pole, and for the lay people, it means कि काफी दूर है बंदा. तो शुरू करते हैं आज का सत्संग CFBR के नारों से. क्षमा चाहते हैं, थोड़ा लेट हो गया. जैसे कि जेवी ने कहा, हम ब्रश कर रहे थे. ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में 2 बार करना चाहिए, यानी ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, भले नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल. और ताकि हम भक्तों तक पहुंच पाए, हमने ये समय चुना सुबह अलार्म रख के उठने का. तो आशा है कि ज्यादा लोग जुड़ेंगे आज. हम हैं क्राइस्ट चर्च में. दिस इज इन न्यूजीलैंड. और ये मेरा दूसरा लाइव है टूर पे से. और आशा है कि और आगे भी कर पाएंगे, लेकिन हर हफ्ते एक नया एडवेंचर है, क्योंकि हमने इतने टाइम जोन जंप कर लिए हैं पिछले कुछ दिनों में कि अभी मुझे लग रहा है कि नींद की जरूरत ही क्या है लाइफ में. इट इज ओवर रेटेड. आखिर इंसान सोता भी क्यों है? जरूरत नहीं है. यू कैन स्लीप व्हेन यू डाई. बट ऑफ कोर्स ये सब हम अभी हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल गुरुजी जवान हैं थोड़े बहुत, तो खींच रहे हैं. लेकिन आई थिंक आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन सून. सो बिफोर दैट हैपेंस, आई नीड टू गेट गुड नाइट स्लीप इन विच आई हैवंट बीन एबल टू. आज रात को निकलेंगे क्राइस्ट चर्च से. हम पहुंचेंगे ऑकलैंड नामक शहर में, जो इनका सबसे बड़ा शहर है. वहीं पे शो है कल, यानी सैटरडे 2 मार्च को. तो यदि कोई वहां रहता है या आप किसी को पहचानते हो दूर दूर का भी, तो आप उनको बताइएगा. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल आर कमिंग. आई एम येट टू टॉक टू द वेन्यू अबाउट दैट. इट्स अ वेरी नाइस क्लब इन फैक्ट, ऑन क्वीन स्ट्रीट इन ऑकलैंड. What I'm doing in this tour is I'm doing all comedy clubs across Australia and for this show in New Zealand, because we want the perfect vibe for stand up. क्योंकि हम बिल्कुल ही बड़े वाले अरीना नहीं बुक कर सकते, क्योंकि हम भाई नहीं है. और दूसरा ये है कि जो बीच वाला होता है ना, वो बैंक्वेट हॉल वाला जोन होता है ना, तो हमको वो फाल्गुनी वाला वाइब भी नहीं चाहिए. तो वी वांट अ प्रॉपर क्लब वाइब. नाइस क्लब टुमारो, क्लासिक कॉमेडी क्लब इन ऑकलैंड. और हम संडे को भी कर रहे हैं इन एडलेड. तो एवरीवन आई नो हैज टोल्ड मी कि एडलेड जाना ही क्यों है, वो सिर्फ गांव है, वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक एयरपोर्ट है और बाकी बस लोग बैठे हैं मरने की तैयारी करते हुए. इतना छोटा गांव है, मत जाइए. पर हम फिर भी जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी कीड़े हैं बहुत. तो ये शो होगा संडे, यानी कि 3 मार्च को. तो अगर आप किसी को पहचानते हो दूर दूर के रिश्तेदारों को, तो भी उनको बताइएगा एडलेड में शो संडे को. और बाकी तो आपको पता है कि हम पूरा कॉन्टिनेंट ही छान मारे हैं. उसके बाद हम सिडनी करेंगे, ब्रिस्बेन करेंगे, पर्थ करेंगे, और एक बार फिर मेलबर्न करेंगे. मेलबर्न शो एक हो चुका लास्ट वीक, माई फर्स्ट शो ऑन दिस टूर. इट वेंट ग्रेट. इट वाज सोल्ड आउट लाइक अ वीक प्रायर. एंड काफी सत्संगी लोग आए थे वो देखने के लिए भी. तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपके फेलो सीकर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो हमारा ब्लॉग भी पढ़ते हैं. इज ऑलवेज नाइस टू सी एंड ऑलवेज नाइस टू हियर, नो मैटर वेयर यू गो, बिग टाउन, स्मॉल टाउन और एनी कंट्री. तो शुरुआत करते हैं. एक बार देखता हूँ कौन कौन आ चुका है, कितने लोग हैं जिमी हमारे साथ. क्या तुम हो 100 पहली के बात? आसपास। आर यू विथ अस? अरे हाँ, ऑफ कोर्स, ये कहाँ से? अरे इंडिया में उसका तो ये थोड़ी इंटरनेट खराब है ना? नहीं, वो है ना। वो तो वक्त ही बताएगा. पुष्कर पुदर इज हियर. सत्य सनातना भक्ति इज हियर. ओके. ओंकार इज हियर. निर्वाण निर्वाण मोहित, मनीष इज हियर. श्वेता इज हियर. क्या बात है. अ, निर्वाण को क्या श्वेता क्या बोली? एवरीवन इज लिविंग इन, आई एम श्योर ही मिसेस पुनीत. आई डोंट नो व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट. अच्छा, साइरस. ओके. साहिल शर्मा, आई डोंट नो व्हाट यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट, व्हाई साइरस अनहैप्पी. ओके. ये अरे थोड़ा एक साहिल इसे साहिल साइड. भाई। अरे अपने साहिल भाई हैं क्या? हाँ हाँ, अरे। अरे इधर आई. क्या बात है साहिल. आई होप यू मूड ऑन फ्रॉम रशियन टू नॉर्वेजियन नॉवेलिस्ट.
और एटलीस्ट तो मुराकामी, क्योंकि वो मुराकामी भी काफी दुखी लंड आदमी है। I I like how you started it with I hope you moved on from the Russian. Also, if I may suggest, there is one book of Murakami which is called Men Without Women. तो वहीं से शुरुआत की। With Sunny is here. Yeah, it's fucking 5 a.m. in Australia, mate. It's 7 a.m. in New Zealand. New Zealand is even cleaner than Australia. आपको क्या ही बताएं हम। जो एक समय पर नहीं, एनआरआई लोग बोलते थे कि अरे इस रास्ते इतने साफ है कि आप उस पर रोटी भी रख के खा सकते हो, वैसा मामला है यहाँ पे। धूल है ही नहीं बेंचो, पता नहीं धूल कहाँ चली गई पूरी। अरे अभिषेक कुमार। दिस हाँ। इज एन ऑब्जर्वेशन आई गॉट फ्रॉम ऐसा अदर पीपल ऑल्सो, कि मैं पूछता हूँ कि ऐसा जो अपने एनआरआई लोग है, ऐसा मेरा हाँ। बॉस वॉस लोग होता है कुछ कुछ, तो उनको पूछता हूँ कि क्या भाई वहाँ पे क्या अलग हो रहा है अपने भारत देश से, तो बोलता हाँ। है द वन थिंग, द ओनली थिंग आई नोटिस्ड विच इज डिफरेंट, और वो इंडोनेशिया में रहता था, ठीक है, हाँ। डिफरेंट फ्रॉम इंडिया इज धूल नहीं है वहाँ पे, इंडिया में किधर भी जाओ धूल ही धूल मिलता है। वही समझता नहीं है कि यार धूल कैसे नहीं हो सकती है, धूल यानी मिट्टी, मिट्टी नहीं है क्या यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है। बताओ। बताओ। और कौन कौन आया है, जरा मुझे ये दिक्कत हो रही है कमेंट पढ़ने में। अपने आशुतोष भैया है, पुष्कर हाँ। भैया है, सुमित भैया पुष्कर, है। पुष्कर भैया, क्या बात है। अपने लेट मी सब है जस्ट अपने चेक। रेगुलर्स, है, सब है। रेगुलर्स है सब। हाँ, रेगुलर्स, सत्संगी लोग रेगुलर्स। आए हैं सब। अच्छा। अच्छा, वी हैव हाउ मेनी पीपल, 100 पीपल वाचिंग नाउ। हाँ, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सत्संग की। हमने सोचा क्या टॉपिक चुना जाए, देन आई थॉट व्हाई नॉट इज राइट देयर, लेट्स टॉक अबाउट पैराडाइज। समथिंग दैट एवरीबody chases but nobody gets, and sometimes you feel you've seen it but it goes away quicker than you can think. And it made me wonder, what is paradise anyway? Is paradise going to a land far, far away and seeing wonderful things, but then not sleeping because you don't have time to see all the wonderful things? Is paradise being born in the perfect place, being lucky enough to be born there and growing up never realizing your privilege? Or is paradise growing up in a land of depravity, but finally at one point, through whatever hardships it takes, becoming your own person? I guess the answer is always depends. बट जो हमने यहाँ पे देखा वो थोड़ा मुश्किल ही है मानना। जिस दिन हम उतरे मेलबर्न में तो हमारे दोस्त ने बताया हमको कि यहाँ का AQI है 808। आई डिड नॉट नो कि AQI इन सिंगल डिजिट वॉज इवन पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मुंबई में 100 तक जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। अगर शहर में 8 है तो जब हम जहाँ पे गए थे न्यूजीलैंड में, वहां पर तो मुझे लगता है शायद माइनस में ही होगा। इतना ऑक्सीजन हमारे लंग्स ले नहीं पा रहे हैं। but here you can almost breathe it in and you notice the difference that is there. But again, they're lucky, no? And they arrived at this land also through centuries of plunder and murder and rape. So फिर begs the question again, what is paradise anyway? I feel that paradise, if at all it exists, is a place where you are true to yourself and you are your own person. By that, what I mean is you're completely conscious of your shortcomings and also the reason where they come from. But at the same time, you also try to do the best you can without being under the pressure of doing it in order to punch a ticket to heaven. Uh, I know it's too long a sentence, but you can always play it at half the speed on YouTube and try to make sense of it. Does that make sense, Jamie? ये मेरे को आपने सुबह ऐसा AQI का बोला और मैं इधर सोच रहा हूँ, इधर 250 चल रहा है मेरा। क्योंकि स्पेशल के बाद बहुत लोग यही बात करते हैं हमसे, क्या साफ हवा गुरुजी, साफ हवा चाहिए। तो वो तो है ही ना, साफ हवा अगर नहीं आपके पास तो आप जिंदा भी क्यों हो। बाकी सब बातें बाद में आती है, साफ हवा साफ पानी नहीं है आपके पास, फिर आप क्या ही लड़ झगड़ रहे हो। किसने क्या ड्रेस पहना नहीं पहना, किसने किसका तोड़ दिया नहीं तोड़ा, क्या। बट बहुत फर्क है, लाइक दे वर लकी टू कम अपॉन कंट्रीज लाइक दिस।
and natives were so few that they could kill them off successfully. You know, they tried. In our case, also they couldn't because there are too many of us back then also. So can you blame Indians for being the way they are after centuries of being oppressed? Or can you blame the white people here who born after generations of conquest? So I think very few people can be blamed in the end. You know, I think the politicians and the people who work in the news channels who enable them, these two people you can blame completely. बाकी तो it is just an accident of birth where you were born. कल हम एक रेडियो शो पे थे यहाँ पे सिडनी के, उसमें बात चल रही थी कि रेसिज्म यहाँ तक भी होता है उनकी तरफ से और हमारी तरफ से कास्ट सिस्टम भी हमारी छुट्टी नहीं बाहर जाके. And I thought maybe people just can't help it. No, I mean you can hate them for what they do, but the point is that racism or the caste system got into the head so early in life they had no chance. उसके बाद बंदा हार्वर्ड में चले जाए वो सब कॉन्शियस से निकलता नहीं है. तो इज इट रियली हिज फॉल्ट? इट इज जस्ट ट्रॉमा बीइंग पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशंस. वेरी रेयरली कैन समवन break the chain and really rise above. People do rise above, you know, money wise, but यहाँ अंदर तो गटर ही है तो उसका क्या कर सकते हैं. और कोई जुड़ा है अगर अभी अभी स्ट्रीम में तो कृपया लाइक कीजिए स्ट्रीम को. हम बेंचर्स अलार्म रख के उठे हैं 2 घंटा सो के. तो यू बेटर लाइक द स्ट्रीम सो इट रीचेस मोर पीपल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. इफ यू जस्ट जॉइंड इन तो CFBR के साथ चैट में जुड़ जाइए. That's about all I have for you today. We'll take some questions before we call it a night or a day, depending on wherever you are. क्या लिंक डला हुआ है सब शोज का डिस्क्रिप्शन हाँ में? हाँ, है। है ना? ओके. आई थिंक हो सके तो ऑकलैंड जो कल है उसका लिंक डाल दो यहाँ पे, और एडलेड जो परसों है उसका. Prachi is here. Always nice to see Prachi on the live sessions. सर जो है दिल्ली में हवा. लीप डे अच्छा आज लीप डे है क्या आज? क्या है डे आज? लीप. अच्छा ये सिखाना बंद हो गया क्या स्कूल में? सॉरी सॉरी. लीप डे भी एक होता है. क्या लीफ डे क्या होता है? लीप लीप डे. अच्छा, लीप ईयर डे, अच्छा, अरे, अच्छा, ऐसा। 29 फेब लीप ईयर डे, मैं भी भूल गया था. हाँ। आशुतोष जी सिंह, पुनीत भाई यू आर मिसिंग भारत जोड़ो न्याय यात्रा. यार राइट. अरे ये इधर इंडिया में ये चल रहा है ना, सोशल्स में सब ऐसा, कोई भी एक ड्रिंक आपको 30 रुपए में मिलेगा, 29 रुपए में, 29, बिकॉज आज लीप डे। कहाँ पे कहाँ पे? सोशल्स में, कोई भी सोशल्स में। वाओ, व्हाट अ वे टू सेलिब्रेट. हाँ, तो इज इट इवन अ थिंग टू? बच्चे लोग पहुंच गए वहां पे जोश में कि अरे 30 रुपए में मिलेगा, 30 रुपए में मिलेगा। वहां पे आके मालूम पड़ा कि पर पर्सन को सिर्फ एक ड्रिंक 30 रुपए में मिलेगा, सब ड्रिंक नहीं मिलेगा। अच्छा वो फिर भी ठीक है ना, एक ड्रिंक. हाँ। बच्चे तो राड़ा करने पहुंच गए थे क्या? 29 में एक हाँ। ड्रिंक मिलेगा तो क्या हो, राइट्स हो जाएगा. अरे बच्चे लोग तो परेशान हो गए ना, कि उम्मीद लेके आए थे कि यार अरे मजा अरे आएगा, अरे अरे. 100 रुपए में नशा हो जाएगा करके। सौम्या राउत इज सेइंग इट्स 2:30 AM हियर. सोया नहीं, कल ऑफिस है. ये कहाँ पे हो यार? अब 2:30 कहाँ बजा है अभी? टीका टू बच थर्टी चुका है। अमेरिका होगा शायद, अमेरिका, ईस्ट कोस्ट. एक We have a super chat coming in. All right, who is this? Ritik Kapoor. Slightly related to the topic, have you watched Donkey? Thoughts on the message promoted in the movie? नहीं यार मैंने देखी नहीं है, पर I don't know about the message. Maybe you can tell us what it is. But it's about people who are doing these jump flights to leave the country, like basically jumping the border to go abroad. No? It's very sad that that happens for any country. And the fact that we are one of them, despite the golden age being ushered in by our avatar, uh, I don't know what to say, man. कल यही बात चल रही थी लाइव पे भी जो मैंने कल करा एक सिडनी के रेडियो स्टेशन के लिए, कि इंडिया हैज वन ऑफ द लोवेस्ट व्हीकल ओनरशिप्स इन द वर्ल्ड. तो अब्रॉड it is more than one per person vehicle, like Western world at least. And even
कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया आर फार अहेड ऑफ अस। इंडिया में 1,000 लोगों के बीच में 33 लोगों के पास गाड़ी है सिर्फ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि गाड़ी होना ही प्रोग्रेस है, बट इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेटर। बाकी आप पर कैपिटा जीडीपी देख लो तो ऑफ कोर्स देयर इज पॉवर्टी, जस्ट दैट नाउ इट इज नॉट फैशनेबल टू टॉक अबाउट इट। एक टाइम पे होता था फैशनेबल, क्वाइट फैशनेबल इनफैक्ट। तो नॉट श्योर आई एम I heard it's not the best movie, like just movie making wise, but then you never know with these things. My personal experience is that people don't want to listen to anything which is socially relevant anymore. उनका हो गया अभी, ये एक अलग फेज है, इनको सिर्फ नशे चाहिए अभी आजकल की तारीख में। और क्या होता है, पीपल हु आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय these issues do not have the agency to voice their opinion on Twitter or see a movie and then review it. अब समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी जिनको फर्क पड़ता है पॉलिटिक्स से, सरकार से, पॉलिसी से, उनको तो पता भी नहीं चला कि उनको फर्क पड़ रहा है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वाज द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस इन द लॉकडाउन, when lakhs of laborers walked on foot back to their hometown because they are out of jobs and out of money and nobody would help them. एंड वी आर फाइटिंग इट आउट ऑन ट्विटर कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, भक्त लोग बोल रहे ऐसा ही होना चाहिए। बट नन ऑफ दिस टू पार्टी एक्चुअली अफेक्टेड। जो वर्कर नंगे पांव चल रहा था एक्सप्रेस वे पे, उसके पास ट्विटर अकाउंट नहीं था। तो आई गेस यही होता है। तो जो प्रिविलेज क्लास है, जो थोड़ी बहुत आवाज उठा सकता है, उनका भी हो चुका है 10 साल। बीच में कोरोना भी आ गया, उनको लगता है ठीक है ना, अपना लाइफ तो चल ही रहा है, माँ चुदाए दुनिया। मुझे ये फीलिंग आती है फ्रॉम माई वांटेज पॉइंट, नो, बिकॉज आई डू दिस एवरी डे एंड आई सी द ऑडियंस रिएक्शन और लैक ऑफ इट। तो आई थिंक डंकी फेल प्रे टू द सेम phenomenon, that this is a country which just does not care anymore. And when I say care, it means you care for the people who are not as privileged as you, because everybody cares for themselves and their own kind and their own family. That is just selfishness. That's not even care. So that's what I think happened with Donkey. पुष्कर पुदा जितेंद्र वो सब टूल किट है अकॉर्डिंग टू व्हाट्स। अरे मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, डंकी क्या है? मूवी है शाहरुख खान का, जो राजू अच्छा। हिरानी ने बनाई थी। राजू हिरानी पता है आपको? हाँ इट इज हाँ बिफोर यू हाँ। वर बोर्न। ओके, हाँ। तो it was a combination which was much awaited. The biggest star and the biggest director together for the first time, हाँ। but it did not work. There were people saying this problematic in the way they showed some stereotype characters, वगैरह वगैरह। So, having not seen the movie, I can't comment on how good it is per se, but message-wise, I think people don't want it anymore. Utkarsh is saying, imagine relevance level of donkey in Punjab where 1 in 3 lined up to go to UK or Canada for the better lifestyle. बात तो सही है। साहिल बोले, पुनीत सर आपने सुमित आनंद से रिसेंटली बात की है, ही इज नॉट डूइंग गुड इट सीम्स, आई एम कंसर्न। अरे क्या ही इज नॉट डूइंग व्हाट? ही इज नॉट डूइंग वेल। अरे क्या हो गया सुमित को? Arey, we get this a lot. No, people ask me because when they see his Insta and all, they feel he's going through something mentally, or he's depressed, or he's just falling apart. But when you meet him in person, he seems fine. I mean, he's a weird guy, but again, who defines what weird is? So when we meet him, we work with him also. We plan his tour across the country. He's doing fine. I think he's just messing around on Instagram. But having said that, it is still concerning for me also. So I don't know what to say, Sahil. He's better than you think he is. How does he really feel? Nobody knows. Maybe he does not know himself also. SM बोल रहे हैं CFBR। थैंक यू। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, SM साहब यूरोप में रहते हैं, वो भी एक तरीके की पैराडाइज में ही रहते हैं। तो दे वुड बी बेटर इक्विप्ड टू चाइम इन ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे। Jitendra is saying thoughts on farmers' protest around the world, Guruji. Uh, I think it's very much linked to how the economy works and how the climate crisis is taking hold of everything. So, at one point, maybe all these protests will unite,
but then it will get out of hand. If you look at the MSP demand, if you really go by it, what they're asking for, then it is beyond budgetary possibility. So I can understand the anger, but then a protest of this size can really spiral out of control. So while I haven't been studying the details of the protests in Europe, but I think what has happened is people who create the most value physically have been pushed further and further down the value chain, and the Wall Street scumbags who produce nothing get the most value. Do you know that in the total world economy, 50% is only actual goods and services, 50% over that is just arbitrage. So this is bound to happen at some point or the other. Uh, Uncertain, I think it's uncertain what will happen in the future. But one thing is for sure that you have to respect people who produce your food little bit more, little bit. अपने को सिखाया था स्कूल टाइम में जय किसान जय जवान, पर अभी आज की तारीख में सरकार खुद बोल रही है कि मारो इनको तो अरे सिलेबस भी चेंज हो ही जाएगा आई थिंक. और मे बी रोबोट्स विल डू इट नो, देन फक एवरीबॉडी. दे आर ऑलरेडी डूइंग इट एक्चुअली, देयर आर अभी एटलीस्ट अब्रॉड मशीन्स इतना है तो मशीन्स इतना है कि लेबर कम ही लगता है. तो जिनको आप फार्मर के तौर पे देख रहे हो यूरोप में, दे आर बेटर ऑफ देन मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. बट स्टिल, be that as it may, it is still hard work. It's physical labor, something which you and I have never known in our life. आई Nirvan, थिंक Vivek, is the truth. In fact, we are hurting towards it. Wait till what is the CAA NRC? This, okay, CAA NRC comes. I don't know what is happening in that chat section. Any question? हाँ अपने रजत भाई is asking a very critical question. I think I also want the answer to this, which is should we lend money to friends? Should we lend money to friends? Great question. You shouldn't lend money to anybody because nobody is good with money. Nobody at all. And the moment money gets involved in personal relationships, it goes down the drain 9 times out of 10. But then sometimes the person is so close, then you feel कि चलो गया तो गया और क्या ही कर सकते. कि none of us contributes or donates nearly as much as we ought to be donating. तो फिर आपको लगता है कि कोई आप चलो आपको पहचानता ही है बंदा, साक्षात खड़ा है सामने, दे दो. But what happens is people who usually ask for money tend to be habitual loan takers, and then the habitual loan takers are also habitual defaulters. I think it should be avoided as far as possible. But again, it's often a very personal or emotional decision, not a fiscal one. If it was a fiscal one, you would never do it. So, इसका ये कोरोलरी के फर्स्ट इज आप समझो डेट पे आते हो तो किसको पैसा देना चाहिए पहले? शुड बी अरे लाइक that depends on feminism कहाँ तक पहुंचा है ना आपके रिलेशनशिप में. आई थिंक आफ्टर बट 2 years. आफ्टर 2 years तो आई थिंक इक्वल होना चाहिए. वो उसमें भी यही कि थोड़ी ना आप एक्सेल शीट मेंटेन करोगे. हाँ So it's a gray area. I think if it's 2 years, you really like the person, you're not counting also. That's the way you should look at it. If you're counting, then it's 2 years too many. Also, some women have told me that if I pay for it, it means the date is not going well. So never be too happy. हाँ. If she lets you pay, she likes you, at least on the first couple of dates. अरे नहीं भाई, ऐसा ऐसा नहीं बोलते. इट्स हाउ शुड आई पुट दिस. नहीं बोलता हूँ मैं इधर लाइव. वो कभी अरे कॉल. बोल दो, you're anonymous is okay. Nobody knows where you live also, which city you live in. अरे वो वाला एक मीम आया था, वो काफी रिलेटेबल हो गया कि when you realize that uh, guys have been fucking her for free and you have been dining and mining her, तो वो थोड़ा ज्यादा वो हो गया कि अरे हम
तो यार तब अभी से मैं थोड़ा ऐसा सोचने किसके लग किस वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट यार, इतना मत अफसोस करो उसका। गया। ऋतिक कपूर actually where can we see your Sydney लाइव रेडियो चैनल वाला सेशन, वो मेरे अभी तक मेरे इंस्टा पे पड़ा है, स्टोरीज में है, लिंक आप देख लीजिए वहां से। Dheeraj is saying, I'm sorry if this is off topic, ignore if it is, but have you watched Frankie Boy's New World Order, the previous seasons 1 to 6? No, I do intend to at some point. I like Frankie, and British humor in general is very dark and dry. It's just the way I like it. But no, haven't had the time yet. Thoughts about Charvak, Guruji? So, if you are referring to Charvak, the philosopher in ancient Indian tradition, then I think that I haven't read all of what he's written, but he's often misquoted and misinterpreted by people to suit their purpose. No, like the absolute atheist will quote him saying कि देखो इसने कहा है सब चुतिया पे है, and the bucks will quote him saying देखिए हमारे पास ये भी था, हमारे पास वो भी था, हमारे पास जीरो भी था, हमारे पास वन भी था। So I think is, but then that happens with all historical figures, no, they get appropriated. So I think पूरा पढ़े बिना तो I wouldn't want to comment. So Soumya, मुझे where do you see yourself in 5 years as Baba? I don't know, अपना भी होगा शायद कैलाशा कहीं पे, देखते हैं, प्लॉट ढूंढ रहे हैं हम करजट के आगे कहीं पे। अरे करजत के आगे क्यों, अभी वहां पे हो ना, वो क्या चर्च स्ट्रीट। हाँ। हाँ। हाँ भाई, यहाँ पे एक एक घर 5-5 मिलियन का है तो अभी। 5 मिलियन क्या रुपया की? हाँ, डॉलर। कौन सा डॉलर? एनजेड डॉलर, जो 50 रुपए के आसपास होता है, बाकी का मैथ्स आप जोड़ लो। 5 मिलियन भी बहुत है ना फिर तो। या 2.5 करोड़ हो गया ना फिर। ढाई नहीं, नहीं, 25 करोड़ हो गया। 25, या। अरे बाबू, अरे अरे अरे, और इतना उसका सिर्फ घर आएगा, फिर पिज्जा $40 का अलग से देने का आपको, कि खाओगे तो आप वही यहाँ पे आके भी। अरे अरे भाई, स्टोरी में ट्विस्ट आ चुका है, साहिल बोल रहे कि पुलिस सर, आई हैव बीन ट्राइंग माय हैंड एट ओपन माइक्स, फीलिंग सो अलाइव, थैंक यू फॉर बीइंग हु यू आर। अरे ये क्या हो गया? शिव 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 शिव। अरे 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 राम अरे हरे। अरे, ये दिस इज लाइक सीजन 2 ऑफ द लव स्टोरी। क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ था, अभी चालू हुआ है। अरे बट मे बी ही वाज ऑलवेज अ कॉमिक एंड ही वाज प्लेइंग अस, यू नेवर नो, ऐसा बहुत होता है हमारे साथ। अ, हम्म। बहुत लोग मैसेज करते हैं, हेलो सर, बिग फैन लौड़ा लहसुन, एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज, सर बाय द वे हम भी कॉमेडी करते हैं। एंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनिशियली पीपल हु appreciate your work are the ones who are the closest to it, no? And that is the open micers are still closer than the civilians. But Sahil, we are happy for you that you're still around, and in fact, you're trying something new and exciting, more exciting than the women who fall for gym trainers. So, क्यों टांग खींच रहे हो बेचारी की? अरे इसको कॉल बैक बोलते हैं। आई एम श्योर ही विल लर्न इट सून इनफ, स्पेशली इफ यू डूइंग ओपन माइक्स इन दिल्ली, जहाँ पे कॉल बैक कहीं से भी आ सकता है, छोले भटूरे से भी। तो सर, योर यूनिक ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉरेन ट्रिप, yeah, it's too early to comment yet, but one thing I noticed that I don't know how to express this is that whenever you see another Indian, a stranger but another clearly Indian person abroad, the look you exchange is the look that ex-convicts give each other when they meet each other after jail outside in the free world. Uh, there's a little bit of guilt there. You don't know why, but it's there. गिल्ट की बात है कि देश छोड़ इस के आ गया सब। हाँ, वन इज सर्वाइवर्स गिल्ट यार, कि हम यहाँ पे आ गए और हम नल से पानी पी सकते हैं। आई कैन नेवर गेट ओवर दिस फैक्ट। अरे सच में? या वेट व्हाट, डायरेक्ट, रियली? या आई जस्ट कांट गेट यूज्ड टू इट, बट है ऐसा डायरेक्ट, यार ऐसे बहुत जगहों पे अब्रॉड में कि जस्ट नल खोलो, पानी पी लो, खत्म। है। या और फिर भी लोग यहाँ पे बॉटल वाला पानी लेते हैं, क्योंकि है गांड मस्ती।
पर आप पी सकते हो। इनफैक्ट इन स्विट्जरलैंड तो इफ यू कीप द tap water in a glass of bottle for a couple of glass bottle for a couple of days, no, you will see calcification, इतने मिनरल्स हैं उसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट एल्प से आ रहा है। अरे ये तो ऐसा मत बोलो। मैं इधर 250 के AQI में रह रहा हूँ, आप बोल रहे हो नल से पानी पी सकते हैं। मेरे को नल से बर्तन नहीं धोना। यही है अमृत काल, जी लो जी लो। सर नैन ने एक सुपर चैट भेजा है 40 इंडियन रुपीज का, कि सर एनी हार्श ट्रूथ्स इन लाइफ विच यू इग्नोर। यस, आई इग्नोर द फैक्ट दैट all relationships and all forms of love are in the end selfish, including your mother's love, because what bigger selfishness than to preserve your own genes, even though they turn out to be Raja Beta. But you have to live with that. There's a credible book called okay, Lokayata Charvaka Philosophical Inquiry, Pradeep Gokhale, for those interested. All right, thank you, Romil, for sharing that. I will look it up myself. I don't know when, but I will, along with all the Frankie Boyle seasons that I've missed. Slippery Slytherin is saying, मेरे दोस्त का US वीजा लगा है, वो 6 months से बॉटल का पानी पी रहा है। He's preparing to go. बिस्लरी से गांड हो रहा है, as I say in one of the videos. सत्य प्रिया is saying, कहाँ गया सत्य प्रिया? हाँ, देखो तो, हाँ, people go to गो gym टू। after breakup, but Sahil went to comedy club from gym. मैं बट वो जिम भी नहीं गया ना, जिम गया होता तो शायद ना होता ऐसा। नहीं, पर जिम में ही लड़की चली गई ना, ट्रेनर के साथ में। हाँ तो लड़की अकेली जिम गई ना, भाई भी गया होता जिम, थोड़ा बॉडी बनाया होता तो इट वुडंट हैव हैपेंड। अरे वी डोंट नो द एग्जैक्ट कोर्स ऑफ इवेंट, मे बी दे जस्ट एक्सचेंज नंबर्स एंड व्हेन साहिल वाज बैक होम स्लीपिंग, अरे तब इतना पेंट मत करो। तब बीकॉम स्टूडेंट अपनी गेम खेल गया। प्रदीप मलिक has sent, is this Australian dollars, $15, क्या बात है? And is it, what does it mean? एक घोड़ा बैठा है चेयर के ऊपर, does it mean that he's handicapped, the घोड़ा? नो नो, इट मींस प्रदीप का पहला सुपर चैट है लाइव स्ट्रीम। फर्स्ट सुपर चैट है, अरे 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 हाँ वो अजीब अरे, डील करते हुए। वेलकम टू द कल्ट प्रदीप। अनंत अंबानी की शादी में जाओगे? यार ये क्या क्वेश्चन है, ये हमको बुलाया नहीं गया। आई थिंक अरे वी रियाना शुड। वगैरह को जामनगर में बुला रहे, क्या है ये? रियाना को, उसको तो पैसे दिए होंगे ना आने के। हाँ बट जामनगर रियाना क्या, ऐसा अरे मिसमैच। यही यही तो टशन है ना भाई, हमारा पैसा देखो, हम ये भी कर सकते हैं, हम रियाना को नचवा सकते हैं जामनगर की गर्मी में, तो बट अगेन दे विल ऑब्वियसली होल्ड हर अप इन स्टाइल ना, वो तो चार्टर्ड फ्लाइट में आएगी, तो पीपल हैव द वेज ऑफ गेटिंग शिट डन। व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, आप क्या करोगे? आप ढोकड़ा थोड़ी खाओगे सोने का, तो ढोकड़ा ही है। धीरज नरसिम्हा has sent €5. He's from the Eurozone. Thanks for the reply. I think you will like this absurdist monologues. Asa, I guess it referred to Frankie. Is it not? I have seen some of it. I think whatever free time I get, I spend in reading and writing, if at all I get the free time. So then it's very difficult to catch up with the work of other comics, although I would like to. This is why I'm staying back one more week in Melbourne after the comedy festival, just to soak in the other stand-up from around the world. पुष्कर पूजा is saying, अनंत जी अंबानी जी की शादी में कैपिटलिज्म नेपोटिज्म का जोक करो पुनीत। They did hire EIC at one point to perform for them in their mansion or whatever that dildo of a building is in Mumbai. And they said they were very cool about it. Of course, when you have that much money, you are very cool about everything, no? In private at least. In public life आपको करना पड़ता है जो करना पड़ता है, but in private life, and they got paid well, handsomely, I'm sure. सिर्फ खाना वेज था उस दिन, और कोई कंप्लेन नहीं था। वाह, हा 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 is saying, Puneet,
what is the biggest downside of being public figure, even if you're not that big? I personally feel that the biggest downside is that beyond the point, when you're too big, you can never really say what is on your mind because you have to be politically correct. Also, you have too much to lose, and even if you're okay with losing it, the other people will force you to toe the line. Like आप देख रहे हो कैसे आज की तारीख में स्पेशली सीधा कॉल जाता है दिल्ली से, सब लोग को एक ट्वीट डालना पड़ता है. Imagine being under that kind of slavery after being that popular. I think that is the biggest thing you lose, which is why when I say कि डेथ थ्रेट कम आता है, तो आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ दैट स्मॉल प्रिविलेज इफ यू विल ऑफ नॉट बीइंग ऑन द radar is that you can at least be yourself. The moment you're big, they go after you, no? So that is in my book. बाकी लोग बोलते हैं privacy चला जाता है वगैरह वगैरह, वो I'm not that popular yet to say that. I mean, every city I go to, some people will recognize you on the street, but that's okay. Some people, it's like, but if it's every third person, then you can't walk the street ever in your life. So that I think is another big freedom that has been taken away from you. And that's why you see the celebrity snapping often at the paparazzi and people in general. वो एक है ना, पता है आपको वीडियो जिसमें बहुत भीड़ है और अक्षय कुमार कहीं जा रहा है, तो एक बंदा ऊपर से लीन इन करके उसका सर ऐसे करता है, हाँ, उसका तकलीफ फोटो होता ले. है। Yeah, so that's what a big time fame is like. No, it's brutal. People don't really like you also. They just know you and they want something out of you. So that's a very weird place to be in. पुष्पक भाई ने एक सही कमेंट डाला है कि आप पब्लिक में थूक नहीं सकते हो फिर। दैट इज करेक्ट. आशुतोष जी से न्यूजीलैंड में कोई अंधभक्त मिला है क्या? यार मैं अभी तक किसको मिला नहीं, क्योंकि वी आर आउट डूइंग द टूरिस्ट स्टफ ना यहाँ पे. मोस्टली तो इनके लोकल लोग ही हैं, और टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड देयर आर मेनी Asian people, most of whom are Chinese. You can't assume that all of them, of course, are Chinese, but you can tell that most of them are Chinese people, and there's so many of them. They outnumber all the locals and other tourists combined. है तो रियली? बहुत, बट दिस इज ट्रू एवरीवेयर ना, बिकॉज पैसा है, नंबर भी बहुत ज्यादा है, इनके तादाद बहुत है इनकी. और वहाँ के जो मोदी जी है, उन्होंने तानाशाही तो लाई है, बस साथ में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी तो किया ही है. तो एटलीस्ट मिडिल क्लास है काफी, जो यहाँ पे सिर्फ मिथक तरीके पे है, वहां पे असली मिडिल क्लास है, तो है पैसा लोगों के पास, खर्च रहे हैं जाके सब जगह पे. आपने किसी को सिद्धार्थ. चीज के खिलाया कि नहीं? हाँ. यार यहाँ पे गांड धोने का टाइम बचा नहीं है. हम लोग, हमारा इतना लंबा टू डू लिस्ट है. दूसरा क्या है कि यहाँ पे दिन लंबा है, तो रात को 9 बजे सनडाउन होता है और सात हैं? बजे हाँ 7 बजे खुल जाता है, क्योंकि समर चल रहा है यहाँ पे. दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर, अगर ओ, ज्योग्राफी क्लास आपको याद हो तो दिन लंबा है, तो हम भी गिव अप नहीं मारते, हम भी 9 बजे तक गांड मरा रहे हैं बाहर. तो फिर हमको लाइव भी करना है ऐसा वाला चूते जैसा, तो फिर टाइम बचता नहीं है बिल्कुल, ना चीज के खाने का ना खिलाने का. आई वॉज रीडिंग समथिंग, सिद्धार्थ वाज सेइंग कि जापान में आओ यार कॉमेडी. यार पता नहीं यार, पहले ये वाला कर लूं, ये भी बहुत दूर है, इसमें पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे. पहले शो तो गया फुल, आगे का पता नहीं. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस गोस, इट विल डिटरमिन इफ आई हैव द एपेटाइट टू गो आउट अगेन एनी टाइम सून. तब तक आप ऑनलाइन शो ही देखिए. एक हो रहा है 24 तारीख को, गिल्टी बाय स्टैंडर, उसका लिंक भी सेम लिंक में है जो हमने डाला है डिस्क्रिप्शन में. वो But if you 30। are in Australia, you can come for the live show in the month of March in any city, because I'm going to all the cities. Yeah, Slippery Slytherin is saying सर हम 16 लाख पर एनम में टॉप 1% हो रहे हैं इंडिया में, और क्या चाहिए, है ना? बात तो सही है. That means that Jamie, even you are in top 5% at whatever salary you are at. अरे, इतना इतना। हाँ, इतना गरीब है देश भाई. नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया भी नहीं है अभी, आप ऐसा बोल रहे हो टॉप 5%? हाँ, टॉप 5% है ना. The statistics is there in your face. Ajit has given me some suggestions for Melbourne Dirty Secrets Comedy Club to be checked out, and there's also Secret Comedy Club underground. I'll check it out. ठीक है. I'll कितना टाइम हुआ अपना आज का अभी लाइव का? आई नीड टू गेट द फक आउट फ्रॉम हियर, नीड टू चेक आउट आल्सो. अपना हुआ है 40 मिनट होने आया है।
Okay, I think last couple of questions, then we wrap it up. Ishar Kadri is saying, why have you gone to New Zealand? आप अंडमान निकोबार आइलैंड क्यों नहीं गए? गवर्नमेंट wants to know. भाई अंडमान बहुत महंगा है, बाय द वे, टू गो देयर। फ्लाइट्स कम है और दूर भी है काफी, और वहाँ पे होटल वोटल सब कुछ महंगा है। स्कूबा वूबा आप कर सकते हो, लेकिन द थिंग इज यू कैन डू थाईलैंड फॉर चीपर। तो थाईलैंड हैज ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। नो, तो अब जब हम बना लेंगे ये सब, तब जाएंगे। जब शिवनेरी जाएगी अंडमान, तब हम जाएंगे। आई एम श्योर मोदी जी कैन डू इट। अंडर वाटर शिवनेरी चलानी चाहिए, फिर हम जाएंगे। श्वेता इज सेइंग चीज केक क्रेडिट कार्ड पे लेना जिमी। एक अरबाज खान ने पूछा है, हाँ। भाई विच क्रीड ऑफ पीपल डिसअपॉइंटेड यू मोस्ट इन लाइफ? या क्रीड की कहाँ बात करें, इंडिया में क्रीड ही क्रीड है, अलग अलग सब क्रीड्स भी हैं। तो सुपर क्रीड्स भी हैं। I think in general it is the most religious people who disappointed me the most in life. And the stupidity they indulge in, not only ruining their own lives but the lives of others. I think there is no excuse for that anymore in today's world. उत्कर्ष सिंह, एनजेड से मुझे पीएचडी करनी है, माय बकेट आइटम। अच्छा उत्कर्ष, आई एम अज्यूमिंग यू आर अ यंग और यंगिश पर्सन, कि आप अभी भी पीएचडी शुरू करने की सोच रहे हो, क्योंकि पीएचडी तो कम से कम 5 साल का मामला होता है। शायद यहाँ पे आओगे फिर आप पीएचडी भी भूल ही जाओगे, क्योंकि इतनी साफ हवा में आपको क्यों ही और विज्ञान में घुसना है। मनीष सोनाइया इज सेइंग, आर यू इन पैराडाइज नाउ? यू वांट टू कम बैक टू इंडिया फॉर व्हाट? I don't know. This is too early in the tour to be feeling homesick, but it's a daunting tour. It's over 50 days, and I guess after that long abroad, it will take a few days to get used to the noise again and the dust again and the people again. पर आखिर तो आना ही है। अरे मेहता, मेहता है यहाँ पे। लव यू पानिया, एंजॉय करो साफ खाना। बुलाई गया मैं आकाश को। हाँ, नहीं नहीं, मुझे निकलना है, और आई एम श्योर मेहता ऑल्सो, मेहता इज ऑलवेज डूइंग 3 थिंग्स एट द सेम टाइम, सो आई एम श्योर ही मस्ट बी बिजी। क्या philosophical thinking nowadays possible? Of course it is possible. Throughout history it has been possible. In the worst of times, it is merely philosophy that has kept the intellect going. So of course you can do it. It will be lonely, but then that's the whole point of it. सिंगापुर में 230 है, अनय सिंह। अच्छा, बात सही है। तो अगर सिंगापुर में हो आप सौम्या, तो आप आइए, फिर हमारा शो है 9 अप्रैल को। ऑलरेडी उसकी भी हमने लिंक डाल दी है। एट अ वेरी पॉपुलर कॉमेडी शो दैट हैपेंस एवरी ट्यूसडे इन सिंगापुर। Quite a few people have booked already, so if you can plan that far ahead, I think you can, because in Singapore everybody plans ahead in life, unlike India. uh, ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन में भी, देन वी फक ऑफ जेमी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा स्ट्रीम को, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आज प्रसाद भाई पूछ रहे, हाँ। योर व्यूज ऑन पॉलीगैमी। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अगर आपने मिठाई खाई नहीं तो आप रिव्यू नहीं दे सकते, बट ठीक है, आप सिर्फ ऐसा मोनोगमी ऐसा। I feel that what I can say, at least, that monogamy is not natural for sure. No, because if it was that natural, no, you wouldn't feel attracted to somebody else after you're with somebody completely ये committed, आपने and फुल एडवोकेट वाली बात कर दी यहाँ पे। and you wouldn't feel that attracted that often, like which is like every fucking day. So, वैसे there are studies to suggest that once a man is in a stable relationship, his testosterone levels automatically go down to facilitate his domestication. So, व्हाट? या ये नेचर की नसबंदी है। तो but I think in such questions I look to biology for the answer. I look to nature for the answers, and monogamy is very rare in the animal kingdom as well, because in the end, as a biological entity, your primary purpose is to spread your seed as far and wide as possible.
and the way to do it is to have multiple partners, and the men can at least, the women, because their commitment to the relationship is higher, because in the natural world, the relationship is obviously reproduction and not gaslighting like in the human world. So I think it's natural to be attracted to multiple people at the same time, but it's just that for bottom line and for society, you have to neuter yourself. So if you can get out of that system, it's good on you. If you don't, then there's always Netflix to while your life away. अरे Okay, तू आपको वो सुपर पता चैट है से कब? हाँ। कि बीच में ये भी आ गया आजकल कि एथिकल नॉन एथिकल मोनोगमी नॉन पॉलीगैमी ऐसा सब। अरे भाई, इसका तो आई थिंक वो ड्रॉ करना पड़ेगा, वो पाई चार्ट होता है ना ऐसा। Let's do a live on it, maybe if there's something there. नेक्स्ट। Jamie, if you can dig up that, I am sure there will be a, वो क्या बोलते हैं, A intersection B वाला होता है ना ऐसा। हाँ हाँ, सबसेट सब कॉम्प्लीमेंट या यूनियन। तो उसमें सब डाल दो, बीच में होगा डिप्रेशन। तो वो मे बी विल डू इट नेक्स्ट टाइम इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड। सौम्या हैज सेंड $5 क्योंकि सही जवाब था, सौम्या है सिंगापुर में। What's your plan on starting a unique new satire session in YT with having a Baba look? Your Baba views are unique on every topic. You will get more. ये सौम्या इन अ वे जो हम अभी कर रहे हैं वो वही है ना, विदाउट द कॉस्ट्यूम। सो आई थिंक यही सही फिलहाल के लिए। आचार्य प्रशांत भी यही करते हैं ना, वो खुद को आचार्य बोलते हैं बट पहन के आते हैं पैंट शर्ट, बात तो अच्छा ही करते हैं वो भी। तो I think I'll go with the flow on this one because I have not done much content besides stand up on YouTube because I want to do things which are coming to me naturally and things which don't take too much effort to do every week. तो ये क्या मेहता ने पैसा भेजा है, क्या छूते हैं, क्या बोल रहे, अच्छा ओ हिस दे वायरल कॉमिक लोग का टच नहीं अलग है बेंच। मेहता खुलेआम पैसा भेज रहा है मेरे को। Oh man, this is screenshot worthy. Mehta is selling $1,000 for Betty's Burger, Ash throwing, and the MCG tour. क्या बात! And this is despite Mehta knowing that I will have a Sakahari burger if at all I have one. But thank you, Mehta. I will settle it in the next show that we are doing. ना सात को बोल देना इसको पैसे भेज दे वापस 1,000। Oh, man, this is so funny. I think this is a good time to end the stream. If at all there was a question that was pending, Jamie, you think you can tell me? Otherwise, I'll call it a night. I need to get on. एक It's a long day and I haven't slept. Yeah. एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं विच इज उत्कर्ष जी ने पूछा है आर यू मिसिंग इंडिया का कुछ भी लाइक टू मेनी पीपल खाना कुछ भी। Yeah, I'm missing the millets, man. मैं जो मैदा खा खा के मैं खुद मैदा बन गया हूँ यहाँ पे बेंचर। ये लोग और कुछ खाते ही नहीं है। So, meaning they eat meat, which I can't. So then that leaves just the fucking cakes and the scones and the waffles and the breads. It तो सब मैदा ही मैदा है बेंच, तो सब पिल्सबरी मैन बन के घूम रहे हैं यहाँ पे। So I'm missing that already. But besides that, the thing is, if you come down to missing, you'll miss a lot about home because there's so much at home. No, in India, at least there's diversity. I mean, there's poverty, but there's diversity in poverty also. So there's so many things to miss. So I can't let my mind go down that path because I have a long tour to do. I have over a month left to go, well over a month left to go. I have 10 shows left to go, and I have to sell all those fucking shows. I have to jump multiple time zones and somehow still do this live no, for our people, अपने public के लिए करना पड़ेगा ये भी। ट्राई करेंगे, नॉट श्योर। आई विल मीट यू गाइस नेक्स्ट वीक probably from a different time zone, from a different hotel room. Till then, take care, don't fall for astrologers. That's all I have to say tonight. And if you must have cheesecake, at least don't leave your gym membership. uh, एक जस्ट टू रिपीट वन मोर टाइम, टुमारो आई एम डूइंग अ शो इन ऑकलैंड। अगर आपको कोई दूर दूर कोई पहचानता है तो उनको भेजिएगा, बिकॉज आई पर्सनली डोंट नो एनीबॉडी इन ऑकलैंड अदर देन माय ऑर्गेनाइजर देयर। दैट्स टुमारो संडे आई एम डूइंग एडलेट, और वहां पे आई डोंट नो इवन एन ऑर्गेनाइजर।
So these are the two shows which are happening this weekend. Next weekend, Sydney. That show is filling up quickly. It's going to be a great one at a very good club in downtown Sydney. After that, Brisbane, Perth, and Melbourne again. So all the links are there in the description. Thank you very much, guys, for being here. To the regulars and the new people, both Shweta, I can see Pushpak is also there. Sahil is still there. But now I look at him differently because he's an open micer. ठीक है, that's it from me, guys. I really need to head now. Thank you. Good night. Namaskar. साला खत्म।